So this is lecture 20. And what is multivariable function? Can you tell me what is multivariable function? More than one variable. More than one variable. Yeah, right. And how many variables then? Sir, a function has more than 2 or 3 variables. Anything, any number, we don't care. Okay. Let x1, x2, xn be n tuple, right? जैसे 2 tuple 2D हो गया है ना, 3 tuple means 3D, so we have n tuple, okay, such that your xi's are real, all values of xi's are real, and this belongs to a set D. Okay, so let's say D is set of n tuple real values, right? Then a real valued function, okay, multivariable function f multivariable on D is defined as something like W is equal to f of x1, x2, xn. Okay, so of course D is domain and the values of f, this thing will be the range. Now generally in this course we'll restrict ourselves to to the 2 variable function or largely 3 variable at the most. That's it. We are not actually dealing with more than 2 or 3 variables. So there are many examples of this thing. So let's say this is a function where it takes the input as x and y, right? And x and y is what? Input. And what is your z? Z is output. These are the 2 inputs, right? So you put these x and y are inputs and your z is what? Output. Are you getting this? Yes, sir. Yes, right? sir. So Yes, sir. let's say if you put the value -1 and 1, of course you'll get the value of z to be 2. Okay, right? Yes, sir. Yes, sir. Now I was asking something, that is graph of a function. So can you tell me what is the graph of the function? Can anybody? Yes, sir. Sir, Bolo? sir, it will Pictorial. plot the value of the function with respect to the inputs. Not really. Sir, it lies in the Why, domain sir? of the function and the range. Not really. The behavior of a function. That is pretty much vague. What actually graph means? Plotting of points. See, if you talk about the plotting, that is you, right? You are kind of, this is just a plot. Plot is something which is different from graph. If you see the actual definition, of course, plot can be constructed only by the graph. Let me write the definition. You will come to know that. Okay. So let y is equal to f of x be a real valued function. Okay. Is it fine? And then set of all tuples कौन से?
x fx, where of course x belongs to the domain of the function. This set is called the graph. Right? Let me give you an idea. So if I write it as y is equal to x square, right? So that means what? I'm basically drawing a parabola. This curve is made from infinitely many points. Okay. And these infinitely many points, how they can be written? By this set. Okay. So that GF set is called the graph of the function. Is that fine? And when you plot these points, you simply say it what? Plot of the function. This is the plot of the function. Is it okay? Sir, please explain this once again. Okay. Let me explain this. So you got the idea of graph of the function? First of all, tell me. You got this set? Yes, sir. You are getting this set? Okay. So our graph is nothing but the ordered pair, kind of pairs of what? X and f of x. Is it fine? Right? Is it fine? So when you Yes, sir. Yes, sir. when you plot the graph of a function, plot. See, we don't say that this is the plot of the, we usually say that the correct wording should be plot of graph of the function, right? We plot the graph of the function. Okay, so this is the plotting, right? But actual points are what? Which points are getting plotted? यही points है ना वो, है ना? So these points are called the graph. Set of these points are called the graph. Is it okay? Are you Yes, getting sir. this? Yes. Okay. Yes, sir. So why I am coming to this point, that I'll explain. So see, this is your function which is of one variable, right? And then your graph will be of, then this graph will be of two tuple, set of two tuples, na? Is it okay? Yes. Let's say if I talk about this thing, right? Let's say if I talk about this thing, how many inputs are there? Two. So x and y are two inputs, and the third one is what? Output. Output. And output we may write it as let's say xyz, or let's say xy and then f of xy. Yes, If I call it as f of xy, right? If I write it as z is equal to f of xy, is that fine? Then this will be the graph of the function. Yes, sir. Right? And how many tuples are there? Three. So that's Three, why sir. that's why your 3D graph will look like, when you plot your 3D graph, it will look like something like this. You make x axis, y axis, and z axis, right? And then you, let's say, if you may plot a plane, or you may plot a simple sphere, solid. Okay, are you getting this? Are you getting this? Okay. So now, can you tell me what is the domain of this graph? This whole plane, xy plane, right? Yes, sir. Right? Yes, sir. Because Yes, we sir, are yes. taking two inputs at a time. Okay. So basically, we are taking this whole plane, this xy plane, as domain. Is it okay? Are you with me on this? Yes, sir. Yes, sir. And what are the outputs? Outputs are of course measured on Z, and Z. we are showing 3D points, right? And these points are always in the form of x, y, and f of xy. And we know that these two are what? Inputs, and this is what? Output. Is it okay? That's how we plot the graph. Yes, sir. So
if your function is of n variable, then graph will have n plus 1 tuples, right? Are you with me on this? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, So, sir. so let's say we have 2 variable over here, then we have 3 tuple in the graph, right? And if we have 1 variable over here, then we'll have 2 tuples. Okay. Similarly, if we have n variable over here, then we'll have n plus 1 tuples. N plus 1. Okay. Are you with me on this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that's why Yes, sir. when I was talking about the limit continuity in let's say in the 2 variable, so I was saying that let me define it more formally. Okay. So let f of xy be a function approaches to a limit to the limit L as xy approaches to AB. Okay, so something like that. We'll say this. पहले क्या लिखते थे? जब ये चीज होती थी तो ऐसे लिखते थे ना, जब एक वेरिएबल होता था. हाँ, now we have 2 inputs, so we must make a point something like this: xy goes to AB. Is it fine? Yes, sir. Yes. Are you getting Yes, it? sir. So that's how our definition got changed. Why? Because we are dealing with 2 variables now. So of course this will approach to this point. Okay. So let me put it in a rough way, that what does that mean? Okay. So my point was, if I'm dealing with the 1 variable, so I'll be only talking about left hand limit and right hand limit. Yes, right? Because I have Yes, sir. domain of 1 dimension, right? I have a domain which has only 1 dimension. So that means either we can go to the right of a point or go to the left of the point, right? Is it okay? Yes, sir. Right? But why this thing is different from our previous scenario? Because its domain will have 2 variable. So let's say we try to plot it. So if we plot it, it will look like something. सर वो जो आपने एक ग्राफ बनाया था सर, तो वॉइस नहीं आई थी सर, एक बार वापस से बता दो वो. बिल्कुल बिल्कुल. बोलो कौन से वाला? ये वाला? हाँ सर, ये लग रहा है. Yes, sir. इसको हम दोबारा ही बना देते हैं. जिसको हम इधर ले जाते हैं. So now this is your 2 variable function. Okay, 1 variable. So it has domain 1 variable. So it is something, an example of this scenario, right? So you have either left hand limit or right hand limit. Are you getting this now? Yes, sir. Yes, sir. But let's say if you have a variable, if you have a domain which is of 2 variable, so something like that. So limit xy approaches to the point AB. Okay, and then f of xy, and then it will come out to be L, right? Are you getting this? So वो xy point कहाँ पे होगा? Sir, XY plane. Yes. So let's say this is x, this is y,
and this is your point AB. Okay, Yes, and sir. now any xy approaches to AB means what? It can approach from anywhere. Why? Because now our domain is 2D plane, Plane. right? So our domain is 2D plane. So basically what happens that you can choose any path. You can go such in this way. You can choose a parabola to move around this path. You can take a straight line. You can take any path around, to that contains AB, right? So that means if your xy approaches to AB, that means what? Why it is different from one variable? That means xy approaches AB from any possible path. Is it right? Is it right? एक 2D Are plane you के with me on this? Are you with me on this? ठीक है? Yes, sir. और लिमिट आएगी यहाँ पे जैसे value of z ना, that would be limit if it is continuous, of course. Otherwise, if it is not defined, then only limit may exist. Okay? Are you getting this thing? ये चीज समझ आ रही Yes, है? sir. अगर किसी Yes, को sir. नहीं आ रही है, हाँ, समझ आ रही है? आ रही है सर सर. रिपीट कर दो सर. हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि let's say if in this case, let's say if you see in this case, so if your x approaches from A either from left hand side or from right hand side, you see this, this is your limit, right? This value is your limit. Yes, Is it sir. okay? So similarly, this height will be your limit in this case. Okay, z value output. Around output, if it is continuous. If it is not continuous, then we may end up with the limit value only. So something like that, which we have already done. So x square minus 4 upon x minus 2. If you take limit x tends to 2, so it may not be in the domain of the function, but we'll still get the limiting value to be 4, right? Is it fine? Yes, sir. Sir. Okay. Okay. Yes, sir. ओके सो ये जो मैंने एप्सिलॉन डेल्टा रिलेशनशिप करवाया था वो इसमें भी लगता है. तो इसमें मैं सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा एप्सिलॉन डेल्टा की. हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा को लेके, राइट? तो सो दैट डेफिनेशन इज व्हाट? दैट इज फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव such that for all xy belongs to the domain of f and 0x minus a whole square plus y minus b whole square less than delta should imply fx minus fxy minus l is less than epsilon. अब ये कुछ समझ आया? कुछ भी नहीं आया? हाँ, अच्छा, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसी डेफिनेशन को वन वेरिएबल के लिए लिखूंगा मैं, तो ऐसे लिखूंगा फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट फॉर ऑल x belong to domain of x 0x minus a less than delta should imply fx minus l is less than epsilon. ऐसे लिखा था मैंने, है ना? किस पॉइंट पे लिमिट के लिए? when I say that limit x approaches to a f of x is equal to l. और यहाँ पे मैंने किस पॉइंट के लिखा है? when I say that limit xy approaches to a b f of xy is equal to l. ये ध्यान है? So can you pick the major differences of these two different definitions, epsilon delta? Can you mark the major differences? x, y belong. हाँ, एक तो ये रहा x, y, यहाँ सिर्फ x, तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है ना?
कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 वेरिएबल फंक्शन, और वहां पे क्या है, 2 वेरिएबल फंक्शन। तो ये तो आना ही आना था डिफरेंस। एक और डिफरेंस कौन सा आया? सर मॉड्यूलस। सर मॉडुलस। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओके, सो वहां पे था मॉडुलस और यहाँ पे कुछ ऐसी सी चीज आई है। सो कैन यू टॉक अबाउट दिस एक्सप्रेशन? व्हाट इज दिस? Distance of a Distance. Yes. Let me make it more clear. So this is x minus a whole square plus y minus b whole square is less than delta square. Okay? ऐसा लिख सकते हैं? Yes. हाँ, बस एक ही पॉइंट है इसमें से, एक्सेप्ट x y is equal to a b, वो पॉइंट हम नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि लिमिट के केस में डोमेन में वो पॉइंट होना जरूरी नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट हम थ्रो कर देंगे। So this is looking like a circle of radius delta, right? And center at AB, right? Yes, तो sir. वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम इंटरवल लेते थे, कौन सा, A माइनस डेल्टा टू A प्लस डेल्टा। हाँ, और इंटरवल क्यों लेते थे? क्योंकि डोमेन एक 1 डायमेंशनल सेट है, तो 1 डायमेंशनल में क्या आ सकता है, इंटरवल, है ना। और यहां पे हमारे पास डोमेन क्या है, 2 डायमेंशन। Yes, sir. तो 2 डायमेंशन है, तो हम अगर 2 डायमेंशन में एक इंटरवल तो नहीं ले सकते ना ए बी के अराउंड। क्या लेंगे अगर लेंगे तो? प्लेन। एक सर्कल। वैसे एक प्लेन भी ले सकते हैं, वो भी डेफिनेशन है, वो ज्यादा जनरलाइज्ड डेफिनेशन है, लेकिन वो क्लोज्ड एरिया। हाँ, वो नहीं, उसमें भी काफी सारी आगे डेफिनेशन आ जाएंगी, फिर हम ये बता सकेंगे कि उस प्लेन को भी हम सर्कल से कवर कर सकते हैं, इसलिए सर्कल ले सकते हैं, वो इस तरह की डेफिनेशन है। लेकिन ज्योमेट्रिकली यू आर राइट, यू कैन पिक इवन, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्लेन, यू कैन इवन पिक लाइक दिस एनी शेप। ओके, बट of course you need to cover some area around this point where you want to define the limit. Okay, so very simple, I would take what, I'll choose what, I'll make a circle around this. Is it fine? With the center AB, and then I'll claim that if you pick any point around this, इनकी इमेज भी इसके एप्सिलॉन में मैप करनी चाहिए, उसी तरह से जैसे हमने कल इसके लिए किया था। Are you getting this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बताओ जरा। Yes. अच्छा, अब ये बताओ लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेट्स कंक्लूड द पॉइंट नाउ। बोलो। Sir, when xy equals to AB. देखो, अब अगर लेफ्ट वो हैंड लिमिट और epsilon राइट हैंड वाली- लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ना, एक ये सिनेरियो होता है। अच्छा, हाँ। तो उसी तरह से अगर दो अलग अलग पाथ से दो अलग अलग वैल्यूज आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं करेंगे। राइट। हर एक पाथ से क्या आना चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we'll do, that is, the most important test for us, and that's what, the two path test for the non-existence of a limit। बहुत आसान है, right? So as it is clear by the name that you need to find out such paths, two different paths, so that the limits are not same along these paths. Okay, so if the limits are not same along these paths, you will simply say that limit does not exist, right? Are you getting this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So how we do it? So I'll give one example for that. So this is the example which is already present in the book. So example is f of xy is equal to 2x square y upon x square x4
Let me make it a simple example. 2xy plus x square plus y square, right? So what we want to show that limit xy approaches to 0 0, f of xy does not exist. Does not exist. Okay. So we want to. So whenever this is asked, ki show that this limit does not exist, that means you need to construct two paths. You need to find two paths where it happens. Okay. So our first path is, let me show it to you. So let's choose the first path as y is equal to 2x. Now if you put y is equal to 2x over here, what will happen? Can you tell me what will happen? 0. Just Sir, y ये is equal to single 2x. variable function बन जाएगी. हाँ, क्या बनेगा बताओ. 4 by Single 5. variable. 4 by 5. 4 by 5. 4x by square 5. Constant value. x square plus 4x square, ऐसा बनेगा ना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So how are you gonna write it properly? That I'll say that limit xy goes to 0 0, f of xy, that is 2xy upon x square plus y square. Then I'll write it as limit x goes to 0 and I'll restrict it to y is equal to 2x, right? क्योंकि अब ये सारा x में आ गया ना, y की जरूरत ही नहीं रही. So limit x goes to 0, 4x square upon 5x square. तो ये कितना बना? 4 by 5. If I take a different path, let's say y is equal to x. Now what will happen? Limit xy goes to 0 0 and I choose y to be x. Now you put y is equal to x. 1 बन जाएगा. So 2x square upon x square plus x square क्या बन गया? 1 बन गया. Are you getting this? Yes, sir. Yes, sir. So it's 4 by 5, it's 1. So these two are different. अब इसी क्वेश्चन को छोटा करके करने का तरीका क्या है? तुम्हें कुछ नहीं देखना है. अब तुम सोचोगे कि ये पाथ मैं कैसे ढूंढूं? How would I know that this is the path, right? So how would I know that this is the path to be chosen? So you will choose a path in such a way that from either the expression should be free from x or it should be free from y. Okay. So idea would be you simply take it as, so if you have again the same question, 2xy plus upon x square plus y square, and you want limit xy goes to 0 0, you simply put y is equal to mx. Now what do you get? Limit x goes to 0 to mx square upon x square plus m square x square. So limit, समझ आ रहा है ये चीज? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो ये एक्सप्रेशन x से फ्री हो गया ना, x y दोनों से फ्री हो गया, Yes, sir. Yes, sir. कैंसिल हो गया ना. इसी तरह से तो पहले पाथ ऐसे चूज करा, मतलब इस तरह से चूज करा कि फाइनल में x और y खत्म हो जाए यहाँ के अपने आप ही. सो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x y खत्म हो चुके हैं. Yes, Yes. sir. हाँ, Yes, sir. बट क्या ये वैल्यू यूनिक रहेगी? नहीं, क्यों? m वेरिएबल है. m चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगी. हमने पीछे वही तो करके दिखाया. Yes. Yes, एक sir. बार m को चूज किया, एक बार m को क्या चूज किया? 1 चूज किया. तो दोनों में अलग अलग वैल्यूज आई ना. तो Yes, यहाँ sir. भी m को 2 चूज करके देख लो, 4 by 5 आएगी. 1 चूज करोगे तो 1 आ जाएगी, है ना. तो यहाँ सिंपली लिख दोगे विच इज नॉट यूनिक, क्योंकि लिमिट तो यूनिक होनी चाहिए अगर एग्जिस्ट कर रही है तो, लेकिन ये तो यूनिक है नहीं है. तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर लिमिट xy goes to 0 0 f xy does not
exist. Why? Because it is coming out to be different along two different paths. Is it fine? Yes, sir. समझ आ गई सारी कहानी? सो जैसे हम एक वेरिएबल में लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ और राइट हैंड लिमिट चेक करते थे, वैसे इसमें हमने पाथ देख. एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट. अब एक और फाइनल रिमार्क मेरे को देना, नोट जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? पाथ should be selected in such a way that it must pass through AB. जिस पॉइंट पे लिमिट चेक करनी है उस पॉइंट से पाथ को पास जरूर करवाना, राइट? So that point must lie on the path. So if I'm talking about, let's say, y is equal to mx, and I'm taking the limit, I'm considering the point to be 0, 0. That 0, 0 lies on this or not? Yes, sir. Lies. Yes, sir. Yes, sir. Right? So that means, geometrically it means like, so if you have something this, and you are checking the, the limit at point this, and now you say that path passing through this point. So of course, all straight lines I've taken with different slopes, right? But they must pass through the testing point. And testing point is what? Here, 0, 0, at which we are, we want to prove that the limit is not exist. Okay? Yes, sir. So tomorrow we'll do more questions on this. So that's it for today. Anything if you want to ask. एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट हम इस मेथड से जो है उसे नॉन यूनिक बना सकें? समझा नहीं मैं. सर फॉर इंस्टेंस, जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है और जब हमने इसमें y जो है उसे लेट करके रिजल्ट डिराइव किए विच इज नॉट यूनिक. हाँ सर हमारे पास ऐसा हो सकता है कि वो फंक्शन असली में उस लिमिट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हो और हम मतलब डिराइव कर सकें ऐसा कि नहीं वो होगा. यूनिक नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता होगा. देखो, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऑफ कोर्स दो अलग अलग पाथ से दो अलग अलग वैल्यू देगा ही देगा. अगर वो हर पाथ से सेम वैल्यू दे देता है तो ऑफ कोर्स वो एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट? बट लेट्स से दिस इज जस्ट वन पाथ, y is equal to mx. There may be infinitely many paths. कोई y is equal to m square x square भी हो सकता है, y cube is equal to x cube x square भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं ये चेक किया जाता है. एग्जिस्ट कर रही है तो प्रूव किया जाता है एप्सिलॉन डेल्टा से. लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये चेक किया जाता है पाथ ढूंढ के, क्योंकि दो पाथ ढूंढना रिलेटिवली आसान है जहां पे वैल्यू ना सेम आ रही हो, बजाय इस चीज के कि सारे पाथ को सेटिस्फाई करवाया जाए, क्योंकि सारे पाथ तो सेटिस्फाई करवाए ही नहीं जा सकते. एक पॉइंट से तो बहुत सारे पाथ पास करते हैं, है ना? इट्स नॉट ओनली अबाउट स्ट्रेट लाइंस, इट मे बी अ पैराबोला, इट मे बी अ सर्कल, इट मे बी समथिंग एल्स. ओके, तो नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव करनी आसान है बजाय इस चीज के कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. ओके सर. यस सर, अब जैसे ये जो आपने एक्सप्रेशन दिया है, सर मतलब थोड़ा सा इसको चेंज कर दें तो हो सकता है कांस्टेंट ना भी आए, मतलब कि हाँ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है. अगर हजारों पाथ पे सेम आ रही है लेकिन किसी दो पाथ पे भी सेम नहीं आ रही है तो लिमिट सेम नहीं कही जाएगी ना. तो सर किसी तरह कोई भी ऐसे दो पाथ ढूंढने नहीं कही जाएगी. हाँ, हाँ, तो वो दो पाथ तुम्हें ढूंढने हैं. व्हेन आई आस्क कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो ऑफ कोर्स यू नीड टू फाइंड सच पाथ्स जहां से वो कंस्ट्रक्ट करके ऐसा बने कि वो पॉइंट ना आए. तो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है. जैसे यहाँ पे y इक्वल टू mx है, 2-4 क्वेश्चन करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किल करने हैं सो दैट सारी एक्सप्रेशन m में आ जाए, राइट? तो लार्जली ये रहेगा, यू नीड टू किल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वेरिएबल्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन सच अ वे दैट your expression will give the value only in terms of m,
and that is of course not a unique value. Yes, somebody was asking something. यस सर सर आई वाज आस्किंग कि आपने कहा था कि 2 पार्ट्स ढूंढने हमें, बट लास्ट में हमने ये एक ही इक्वेशन लिखी y = mx की, मतलब 2 पार्ट्स नहीं रखे नहीं, ऐसे ही, मतलब इनफाइनाइटली मेनी पाथ्स हैं, वो 2 नहीं है, इनफाइनाइटली मेनी पाथ्स हैं। ध्यान से देखो, वो y = mx है, m जैसे जैसे चेंज करोगे अलग अलग स्ट्रेट लाइन आती जाएगी ना। यस सर So this is the straight lines. This is a family of straight lines actually. If you have read your coordinate geometry carefully, you'll come to know that if I say it as y = 2x, y = 3x, these are unique straight lines. But if I say y = mx, that means it's a family of straight lines having slope m and passing through the origin, right? And why passing through the origin? Because we are checking the limit at origin. So of course we need the paths which are passing through the 0, 0, as I've mentioned in the note as well. So y = mx, it's not one straight line, it is a family of straight lines actually. सर जैसे मतलब एक जनरल सा था डाउट, तो जब हम पाथ बोलते हैं तो मतलब पाथ में जैसे एक लाइन हो गई सर, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं और एक सर्कल हो गया। No, let me give it. अगर यहाँ पे y = mx है, ये ऑलरेडी इनफाइनाइट पाथ्स हैं। ओके, तो मतलब इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन है तो वो इनफाइनाइट पाथ्स हैं। हाँ, इनफाइनाइट पाथ हैं, एक स्ट्रेट लाइन एक पाथ। ओके सर ठीक है, तो वो मैंने मतलब इन जनरल प्रूव कर दिया ना कि अलग अलग m होगा तो अलग अलग पाथ से अलग अलग वैल्यू आती चली जाएंगी। और यहाँ मैंने क्या किया, 2 अलग अलग पाथ चूज किए स्पेसिफिक से, उसमें प्रूव कर दिया। तो तुम दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, दोनों से आंसर जो है वो वैलिड माना जाएगा। ओके सर।